Let you all open all your three eyes. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Paramashivam. 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 Om Nityananda Paramashivam.
Paramashivam. Om Nityananda 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 Paramashivam.
Om Nityananda Paramashivam
Nityanandam. Om Nityananda. Nityananda Paramashivam. Om Nityananda. Anandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasudrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nityananda Pariyantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitiladhita Kasturi Tilakaha Spuranmaladhara Spurita Kadigaupina Vasanaha Nadano Dushtaram Chirasi Phanirajam Shishikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. Nityananda. Welcome you all to Kailasa's Nityanandeshwara Paramashiva Devalaya here in Adi Kailasa Nityanandapeetha Sarvajnapeetham. Here for the past 8 days we have been celebrating the grand festival of our temple, the Nityanandeshwara Paramashiva Brahmotsavam, following meticulously by the grace and presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, the Karthigai Deepam celebrations in Tirunnamalai. It is this very Brahmotsavam which is celebrated in Tirunnamalai that Swamiji, as a young boy, grew up watching and knows all the intricate details about. Whether it is how many deities are present, when and what at what time, what abhishekam happens to which deity, what festivals are small festivals, or their festival is the grand festival, and the details of even where what is procured, from where, how things happen. Everything is so dear to Swamiji's heart, and he has beautifully done it for us again in all of our Nityanandeshwara Paramashiva Devalayas, here in all of our temples, with the same meticulousness and the same excitement. We do and celebrate the Nityanandeshwara Paramashiva Brahmotsavam. Today we are going to offer the Shatmurti Deeparadhana along with the Tirunnamalai, who will be offering the Panchamurti Deeparadhana for the Panchamurtigal here in Tirunnamalai. Here we have the Supreme Pontiff of Hinduism's deity, who we worship as the Nijavatar of Paramashiva, and he is there and he is always going along in the Purupadu, in the procession with the Panchamurtis. The traditional Panchamurtis that are described in the Agamas are 5, basically the family, the Parivaram of Paramashiva. Paramashiva is the Supreme Paramashiva, and he is the unmanifest in manifest, and he exists in our temples, and the science involves how to install him in a temple, and how he the deity as a deity, and how the deity radiates the energy, and then from that deity more deities are created. These deities are the Utsava Vigrahas. The Utsava Vigrahas are the celebration deities. We take them out for celebration, and they grace in such a beautiful way with grand alankaras of multiple choicest flowers, and the grandest decorations are done. They go in procession to the villages around the temple, and they come back to the temple in the late night, and the next day morning, immediately the next day's ritual, Abhishekam rituals begin, and the same deities go again. It is a continuous time when the
everyone looks forward to seeing the deities coming in procession, to seeing the festivities, and everyone gathers with the best of the best artists and the best of the best folk music and the best of all the places. People come from all over the subcontinent just to see Annamalayar and to offer in devotion their um, their time, their treasure, their art, whatever it is, and they all offer it in front of Annamalaya. Yesterday morning, there was the Rathotsavam there in Tiruvannamalai, where the Panchamurtis move in 5 chariots, wooden chariots, throughout the town of Tiruvannamalai. And then today is the 8th day. Today, a special Bhikshandava Utsavam happened. It is on this very day that the Leela of Paramashiva, when Paramashiva comes as Bhikshatana and liberates and destroys the ego of the Tarukavana rishis and gives them liberation. It is a beautiful story, and it is very symbolic of how when one forgets and is affected by Apasmasura, the greatness of Paramashiva, as he is the source and he is whom we are graced with and whom we received everything, and from him we go back, and to him we go back, and from him we come. Those who forget this truth live in a world thinking that they are themselves most powerful, themselves they only create what they wish, but they don't know that there is a divine will, there is the Paramashiva's intention, he is only Leela is this whole universe. So these rishis forget, and they start thinking that because they know some mantras or they know some kriyas, they can manifest anything they want, just like they think they are like Paramashivas themselves. So just because they know some mantras, they get a little pride, and with that pride forget Paramashiva completely. At that time, beautifully, Paramashiva comes. It's a young man in a beautiful form, and literally the first thing is the ego hit to the rishis. The rishikas, their wives, immediately are mesmerized by Paramashiva as a young man and just follow him. And then the rishis get very angry, and they don't forget also, they're not able to see the grace and the divinity in Paramashiva at that time because of their own ego in the way. So then the rishis start throwing weapons and using mantras that they know, and creating some kind of a distraction to destroy Paramashiva. But all fails, and finally the Apasmasura is lifted, the demon of forgetfulness is lifted from them, and they realize that what they have done, that Paramashiva has manifested in their lives, yet they have totally forgot him, and that he is the source, and from him only everything came. So then they ask for forgiveness, and Paramashiva gives them the blessings and gives them anugraha, and that is, in summary, the Leela of Bhikshandava. And today, in the temple of Arunachaleshwara, Bhikshandava had received an abhishekam, a sacred bath, and he is in procession now, going around the temple town. So that Leela was for the 8th day, and tomorrow, the 9th day, is a beautiful Leela where Paramashiva will be gracing on one of the grandest Vahanas that you will ever see. Annamalayar, the main deity of the temple, also known as Periyanayakar, will be gracing on the Kailasa Vahana. This unique vehicle is a picture or an image from a story of when Ravanasura went to have Paramashiva's attention and to receive a boon from Paramashiva in Kailasa. He was flying over Kailasa on his Pushpaka Vimana, and he saw that he wanted to attend to Paramashiva. When he was going there, Paramashiva did not attend to him. Paramashiva was attending to Uma Devi in some conversation. So when he was not attended to, he got very angry, and he went down to the bottom of Kailasa and literally picked up the whole mountain of Kailasa just to get Paramashiva's attention. Of course, and the stories say that Ravanasura was a great devotee of Paramashiva, and he was capable of so much of powerful things.
So at that time, he takes the whole mountain of Kailasa on his shoulders and shakes the whole mountain, but nothing happens. Paramashiva tests him again. He puts his toe down on Kailasa, putting all the weight on Ravana, who is just crushed by the whole mountain at that time. But it is in that time that devotion comes out of Ravana, and he surrenders to Paramashiva at that moment. And we may hear again and again the famous Shivatandava Stotram. It is at this moment, very moment, that Ravana, with his 10 hands and 10 heads, sang the Tandava Stotram to Paramashiva. And it is actually this day of the 10 days of Paramashiva's Leela during the Brahmotsavam that Paramashiva liberates all the Rakshasas, the Loka of Rakshasa and the lower level Lokas that have the Bhutas and all. So Paramashiva liberates one and all beings. There is no being left out. There is no being left out. Everyone has a place in Kailasa. Everyone has a place, and Paramashiva is always looking out for them. So the 10-day Leela is a beautiful example of how Paramashiva is all-encompassingly loving and compassionate to all, no matter who you are. He will be there to liberate you, to give you out of suffering, and to give you the experience of oneness with him. The Leela of that, and that Vahana, what we have come to say is that Vahana is tomorrow. A Vahana is a vehicle on which the deity comes during the time of procession. The deity, the Utsav Vigraha, behind us we have the Soma Skanda deity, Nityananda Ishvara Paramashiva, as So Uma Skanda, meaning the one who, Paramashiva, who graces with Uma Devi, Paramashiva Shakti, and Skanda. The Skanda deity is there between them. So this is the main deity as a part of the Brahmotsavam. Of course, there is Chandrasekhara Murti also, who is also part of the Brahmotsavam. And today we had the celebration with Bhikshandavar, who are all forms of Paramashiva who are celebrated throughout the Brahmotsavam on different days. But the main deity is this deity behind us, Soma Skandamurti, and Periyanayakar, in this same deity who is there in the Arunachaleshwara temple, graces tomorrow on the Kailasa Vahana, beautiful silver Vahana, where the 10-headed Ravana and the 20 arms, he is standing with a huge mountain on his head, and that on top of that mountain, beautifully, Periyanayakar graces. It is a Leela that is a spectacle to see, especially on the ultimate day of this whole Brahmotsavam, leading to the final day of the Brahmotsavam, the Bharani Deepam celebrations and the Karthigai Deepam celebrations in the morning. All the kriyas, the rituals, are told by Paramashiva as methods to be able to experience from oneness and creating the ritual and worshipping the divine outside. So it is established that we are divine within, and then you begin the ritual, and then with that the ritual becomes a power manifestation in itself, where you manifest Paramashiva inside you and then outside. So the Kriya Pada of the Yagamas has intricate details of how one should do the proper cleansing and nyasa with the diet, with the proper yogic practice as fasting and various exercises as such, and dharana, and japa on what you should maintain throughout the day, and then how you should prepare yourself to do the ritual, taking the austerities, and then finally moving into the ritual itself. So the Bharani Deepa is the lamp. Actually, it is on this day that Paramashiva is worshipped as a lamp, and it is a jyoti, and from the lamp, it is ritualistically the homa is done from the fire. The Shiva Agni is invoked into the fire. The Paramashiva is invoked
And Swamiji shares that the Shiva, the fire element, is a medium element that can move. So in the ritual, Shiva Agni is created, and the fire is lit, doing the proper incantation, the mantra of the Shiva Mula mantra, with the initiated disciples. All the rituals done in Adi Kailasa and all of Kailasa's temples are done by the initiated disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism. They have their third eye awakened, and they are power manifestors. So they are all the rituals and all of the events are micromanaged by him personally, making sure that everything is done as per agamas and as per the scriptures and as per the reference temples, who have maintained these traditions for thousands of years. When we do this Shivagni, the deity is invoked in the fire, and from the fire, life is created. We worship the fire. And literally, Swamiji always tells that the bioenergy of Paramashiva is invoked into the fire, and then from that fire, the lamp is lit. A ghee mud lamp. These unique lamps can be only found in the localities of Tirunamale and nearby. They cannot be found anywhere. They're such a close commodity. And then You all open all your three eyes. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam.
परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भां नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति मध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ललाटे त्रिपुण्ड्रीनिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि वनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते। शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय महानुभावाय महेश्वराय सोमाय सूक्ष्माय सुरेश्वराय शोणाद्रिनाथाय नमः शिवाय। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ कवर्दिने नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शूलपानये नमः। ॐ शूलपाणये नमः। खड्वाङ्गिने नमः। ॐ खट्वाङ्गिने नमः। विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ
क्षिपिविष्टाय नमः ॐ शिविविष्टाय नमः अंबिकानाथाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः शिवप्रियाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कामारये नमः ॐ कामारये नमः ॐ मण्डकासुरसूदनाय नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ भीमाय नमः परशुहस्ताय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपानये नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्खाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ मनीश्वराय नमः ॐ मनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः सूर्यसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ मृत्सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भार्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः शक्तिवाससे नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः भूतपतये नमः ॐ स्थानवे नमः स्थानवे नमः ॐ अहिर्बुद्ध्याय नमः ॐ अहिर्बुद्ध्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ स्वात्विकाय नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः विग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः हिताय नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः
ओम पशुपतये नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम हरये नमः। ओम पुष्पदन्तविदे नमः। उषदन्तभिदे नमः। ओम अव्यघ्राय नमः। ओम अव्यघ्राय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम भगनेत्रविधे नमः। ओम भगनेत्रभिदे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्रपादे नमः। ओम सहस्रवादे नमः। ओम अपवर्गपरदाय नमः। ओम अपवर्गप्रदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। अष्टोत्तरशतनामावली अर्चनं करिष्ये। Next, we'll be offering the Lagu Puja, offering the Dhupa Deepa Naivedya, followed by the Shodashopachara Arati Deeparadhana. ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्तितमं पप्रितमं दुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्दानं दृगुंहस्वमाह्वा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संविक्था मा त्वा हि गुंसिषम्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। ओम उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्निर्निरृतिं मम पशुगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि पुंसेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्नागहि श्रिया मा परिपातय। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। दर्शयामि। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। दीपं संदर्शयामि। तनैवेद्यम् ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः।
अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि We will now begin the Shodashopachara Puja with the first offering of the Adikarati. A temple tower of lamps that is offered is also known as the Gopura Arati, offered to Nityananda Paramashiva today. The Agamas describe that the deity should always be respected and always treated as a royal child, a royal guest. The best of the best offerings that should be offered to the deities. The first Arati, the Adikarati, is a lamp form of ourselves. We, having all of the energized nadis inside, reflections of consciousness in our bodies, of energy centers called nadis, are awakened once the lamps are all lit and offered towards Paramashiva. This is symbolic and also a ritual, a kriya, where literally the alignment of all of us and our body's energies happens, and it aligns to Paramashiva on this very time and moment when Deeparadhana is lit and offered to Paramashiva.
सांग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं संगृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्क्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म अलङ्कारदीपं सन्दर्शयामि. ॐ त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः ऋद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति यच्चातुर्मास्य याज्या आत्मनो नावद्येत्. The next offering is the Panchamukha Deeparadhana, to the offering Aarti to the 5 faces of Paramashiva. ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो. विद्महे महानाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्. विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः. सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः. भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भगोद्भवाय नमः. पञ्चमुखदीपं सन्दर्शयामि. The next offering is the offering of the Hiranyapatram, the offering of the Kumbhadeepa. The pot represents prosperity, abundance, and fulfillment. We will now offer all of the inner world and outer world wealth at the divine lotus feet of Nithyananda Paramashiva. Om Hiranyavatram madho purnam dadati
मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। The next offering is Arati. Om तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। बृहत्सामक्षत्रवृद्विद्यविष्णुयं दृश्यभोजस्वभिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वाचेन सगरेण रक्षान् धारयामि. The next offering is the mirror. Offering a beautiful darpan to point our consciousness towards Paramashiva and directly reflect his very own light. Namo namo bhavati chayamano nam keturushsametyagram bhagam devebhyo dvidadadyapram chandramastirate dirghamayuhu. The next offering is the Surya Chandra, celebrating that the reign of Paramashiva is all to wherever the sun and the moon's light shine. Murdhanam divo aratim prithivya avaishwanarajatamagrim kavigum samrajamadithim janana masanna patram जनयन्त देवाः। Next offering is the umbrella. The offering of the shade for Paramashiva. दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्निं कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयन्नो अस्तु. The next offering is the fan that provides cool breeze for Paramashiva. वायुस्तागुम् अग्रे प्रमुदोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतगुं च समानग्रं तद्यस्तजीवं देवानामप्येतुपाथः.
The next offering is the Dwaja, the offering of the flag, celebrating the reign and our allegiance to Paramashiva in Kailasa. Om Ketum Grunvanna केतभेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायताः ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागस्सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ये सचित्रचित्रं चिदयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतामं वयोधाम् Chandram Purvaviryam Vrikantam Chandra Chandragbhigranate Yuvasva. राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत अभीत गुजाम्बा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। नीराजनं संदर्शयामि प्रक्षान्धारयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो ओप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्यैपतिष्ठति। ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति अपीतकुचाम्बा समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेदम् अवधारय। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातामं। हरि ओम हरि ओम। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचाम्बा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेदमवधारय। हरि ओम। इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थोपायवस्थदेवोपस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरि ओम हरि ओम। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचाम्बा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर अरुणामूर्तये नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सामगान प्रिय सामगानमवधारय। एतत् सामगायन्नास्ते हा वूहा वूहा वू। अहमन्नम् 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः। अहग्श्लोककृतः ग्श्लोककृतः ग्श्लोककृत। अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भायि यो मा ददाति शैलेव मा वाह। अहमन्नमन्नमदन्तमास्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः। हरि ओम हरि ओम। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचाम्बा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। अथर्वण वेद प्रिय अथर्वण वेदमवधारय। हरि ओम। षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिश्रवन्तु नः। हरि ओम। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचाम्बा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। स्तोत्र प्रिय स्तोत्रमवधारय। एकाकार समस्त लोकजनकं हेमाद्रिबाणासनं नागापाशकिरीटकुण्डलधरं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं राकाचन्द्रसमानकान्तिमरुणं राजीवनेत्रार्चितं शोकारण्यभवानलं श्रुतिहरं शोणाद्रिनाथं भजे। शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय महानुभावाय महेश्वराय सोमाय सूक्ष्माय सुरेश्वराय
ஷோணாத்ரிநாதாய நம சிவாய. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः. द्राविड वेद प्रिय द्राविड वेद मोधारय. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. அண்ணாமலையும் மன்னா போற்றி, கண்ணாரமுதக்கடலே போற்றி போற்றி. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். பூவார் மலர் கொண்டு அடையார் தொழுவார் பூகள் வார் வானோர்கள். பூவார் மலர் கொண்டு அடையார் தொழுவார் புகழ்வார் வானோர்கள். மூவார் பூரங்கள் எரித்த அன்று மூவார்க்கு அருள் செய்தாய். தோமாமலை நின்ற அதிர வெறிற்றொருவன் நிறை ஓடும் ஆமாம்பினை வந்து அனையும் சாரல் அண்ணாமலையாரே அண்ணாமலையாரே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्. ओम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्. ओम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात्. श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः. सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान्धारयामि. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः. आशीर्वाद प्रिय आशीर्वादम् अवधार्य. ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सबलाः भवन्तु. इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो. तथास्तु. अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः. अदना सदना सन्तु जीवन्तु सरदर्शतम्.
इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्छोदबन्धेभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु राजा धर्मपतिः प्रजासुच्छरिताः पूजाधना सज्जनाः षट्कर्म प्रवरा द्विजाः प्रतिदिनं विद्यानवद्यां सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्मानुष्ठातारः सौजन्यसन्तोषिणः इति स्वस्ति मन्त्रार्था सत्या सफला भवन्तु इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु येषां देवदेवानां महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां सकलभुविसृष्टिस्थितिसंहार तिरोभाव अनुग्रहाख्य पञ्चगत्यपरायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेयपराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव स्वरूपानां श्री आदिगुरु अरुणगिरि योगीश्वर स्वरूपानां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपानां श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर भिन्न स्वरूप परशिव पुत्र रत्नकुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रेयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरडावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सत्यो निर्वाण दीक्षा व्याप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कल्प केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज मान्य महाराज गुरु क्षपण शाख्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहाल ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ गत्रेणाम साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि नवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणीनाम साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वराणाम साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ नवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वराणाम धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणां श्री कैलास पुनरुद्धारकानां श्री कैलास परमाचार्याणां श्रीमद् परमहंसानां परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानंद प्रणव स्वरूपानां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः आरोग्य दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिः
सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपस्य भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवस्य पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्तिसिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवन्मुक्तिप्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तदास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तदास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तदास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तदास्तु सर्वत्र नित्यानन्दध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां शीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञानसंबंध देशिक परमाचार्य स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानन्दम् will be offering the Deeparadhana to the Nityanandeshwara, Swayambhu Nityanandeshwara Paramashiva, the self-manifested linga given to us by Paramashiva, Prakriti itself, brings out the natural intelligence in all of those who come before it. The self-awakened qualities of enlightenment and supreme consciousness awaken inside us once we meet this linga. Such is the power of the Swayambhu Nityanandeshwara and having the darshan of Paramashiva. In these moments, pray for the most auspicious happenings in our life to manifest and for us to give the highest devotion and respect to Paramashiva. We will now offer the विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति अपीत कुचांबा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अरुणाचलेश्वर करुणामूर्तये नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि, रक्षान्धारयामि।
शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलधात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलं परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् त्वं स्मृतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधरनामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम् हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम् Thank you for joining us on this 8th day celebrations of the Shatmurti Deeparadhana and the Darshan of Shri Nityanandeshwara Paramashiva. We welcome you all to join us again tomorrow for the 9th day celebrations. Thank you. Nityananda. I welcome you all with my love and respect. Let you all open all your